کام کے بارے میں جس نے ہمارے لیے وہ کچھ کیا جو بہت سی کتابیں بہت سے لکھنے والے نہیں کر سکے، اور وہ کام تھا تھوڑا تھوڑا ہماری آنکھوں کو کھولنا۔ سو اپنا سیشن بھی کھول دو کرتے ہیں ہم۔ I'll begin with Shahid Nadeem Sahib. Needs no introduction, the legend himself, the man who gave us a tradition of theatre, who gave us a lot of good television, and the man who gave me the confidence and the script of Manto. Nasreen Rehman again needs no introduction, our very dear Chini Khala, who's not only a social activist but a prolific writer and a screenwriter, and she has translated Manto अंग्रेजी में। आज का सेशन खुसूसी तौर पे इनकी किताब की जो सीरीज़ है 3 वॉल्यूम में है जी, मंटो की तमाम कहानियाँ 250 के करीब जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उन सब को एक दफ़ा फिर से अंग्रेज़ी में तर्जुमा करने का ज़िम्मा इन्होंने लिया। पहली वॉल्यूम इज़ आउट जो कि मंटो की बॉम्बे और पूना की शॉर्ट स्टोरीज़ के हवाले से है, वो आज हम यहाँ लॉन्च कर रहे हैं और उसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। सो चीनी खाला, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। ये किताब, और सबसे पहले मैं LLF का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि यहाँ पर मैं आप सबके साथ इस किताब के बारे में कुछ गुफ्तगू कर सकूँ और कुछ ख्यालों का इजहार कर सकूँ। फिर ये कि भाई सरमद खूसत जिन्होंने मंटो का रोल अदा किया था, और अपनी सामिया जिन्होंने मंटो के ड्रामों में हिस्सा लिया था, और मेरे दोस्त शाहिद नदीम जिन्होंने वैसे मेरा बहुत साथ दिया, अमृतसर में भी हमने एक सेशन साथ दिया था, और शायद हमारी पुरानी दोस्ती है कि जबकि हम लंदन में बेनज़ीर के फ्लैट में एमनेस्टी इंटरनेशनल के ख़त लिखा करते थे, तो शायद और सरमद और सामिया अब आप लोगों के हवाले, और जो आप जिस तरह चलेंगे मैं आप लोगों के साथ साथ हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। मेरे साथ समिया मुमताज again needs no introduction जी, an actor by excellence, a star, theatre, film, television, और हमारी बहुत प्यारी बहुत अजीज समिया मुमताज और मेरा नाम है सरमद। शाहिद साहब से अगर मैं शुरू करूँ, ऐसा छोटा सा सवाल, मंटो क्यों? बहुत से क्यों मंटो के साथ जुड़े हुए हैं, क्यों नहीं पढ़ाया गया, क्यों दूर रखा गया, क्यों उसके करीब आने की ज़रूरत आज 75 साल बाद भी है? वेल, आपने मुख्तसर सवाल अगर पूछा है तो उसका मुख्तसर जवाब है मंटो क्यों नहीं। और यकीनन मंटो ने जब हम छोटे थे, बहुत छोटे थे, तब से एक नो था कि मंटो का नाम नहीं लेना, मंटो को हाथ नहीं लगाना, और बाकी सब कुछ जायज़ है। मतलब डिक्टेटरशिप जायज़ है, एक्सप्लॉयटेशन जायज़ है, मुनाफिकत जायज़ है। उसकी हद ये थी कि मंटो ही का एक हम असर था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा आउट ऑफ कर्सी के, उनकी फैमिली भी नोन है, लेकिन वो फुहश किताबें लिखा करते थे वही वहानवी के नाम से, कलबी नाम से उसकी रकम वसूल किया करते थे। वो किताबें धड़ाधड़ बिकती थी और आना लाइब्रेरियों में भी बिकती थी, आवाम तक पहुंचती थी, और उनको अदबी हलकों में सर पे चढ़ाया जाता था, बाकायदा उनकी दस्तार बंदी की जाती थी, उनको अवार्ड्स दिए जाते थे, बड़े बड़े अखबारात में वो कॉलम लिखते थे। तो मंटो देख रहे थे कि ये शख्स जो जिसको कहा जाता था कि वो इस्लाही और बड़ी एक रिफाही किस्म की जो राइटिंग्स कर रहे हैं, और उनके दस्तार फजीलत बाकायदा अदबी हलकों में भी होती थी, और वैसे दस्तारबंदी की तकरीबात भी होती थी। तो
तो मंटो को दबा दिया गया था और मंटो की ज़िंदगी में ही मंटो कुड सी वट एवर इज़ गोइंग ऑन। तो इस लिहाज से मंटो का गुस्सा जो है, यकीनन मंटो गुस्से में था, लेकिन वो हम सब का इज्तिमाई गुस्सा है, जिनको एक आइडियोलॉजी जिन पे थोपी गई, जिन पे एक मोरालिटी थोपी गई, जिन पे एक सियासत थोपी गई। और मंटो के ज़माने में ही यहाँ पर फौजी हुक्मरानी भी शुरू हो गई थी, मार्शल लॉ भी लगने शुरू हो गए थे, और नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का एक मोहताज बनने जा रहा है। ये सारी चीज़ें मंटो देख रहे थे। तो मंटो की सियासत और मंटो का फिक्शन दोनों हमारे लिए शजर ममनुआ थे। और बाद में हमने जब डिस्कवर किया कि हमारा रोल मॉडल, हमारा हीरो, और जो पार्टीशन के ज़माने में जो दहशत गर्दी और जो जुल्म हुआ, उसका सबसे बड़ा गवाह और सबसे बड़ा जो मुअर्रिख है वो मंटो था। तो हमें हर चीज़ जो है हमसे छुपाई गई, और वी आर नाउ प्रिविलेज्ड कि इस हॉल में मंटो यहाँ से चंद 100 गज के फासले पे रहते थे, लक्ष्मी मेंशन में, हॉल रोड जहाँ पर है, और यहाँ पर हर तरफ बन रहा, और अब ये खुल रहा है। इस हॉल में हमने बारहा दफ़ा जो मेरा ड्रामा है मंटो पे कौन है ये गुस्ताख, वो किया है। इसके अलावा तोबा टेक सिंह और नया कानून, और इसके अलावा उसकी रीडिंग्स वगैरह भी की हैं। तो और फिर मंटो की फिल्म, मंटो का सीरियल जिस तरह बना, और आई एम प्राउड कि कुछ मेरी कोशिश से सरमद एग्रीड नॉट ओनली टू डायरेक्ट बट ऑल्सो एक्ट एज मंटो, जो कि शुरू में वो इसके लिए राज़ी नहीं थे। और आई एम प्लीज टू हैव समिया मुमताज़, जो हमारे साथ चली, उनकी इब्तदा ही अजोका से हुई थी, और आज भी वो वी आर प्राउड ऑफ आवर अचीवमेंट्स। तो मैं समझता हूँ कि अब जो दौर है वो मंटो का दौर है, ऑनेस्टी का दौर है, बेबाकी का दौर है, और गुस्से के इजहार का दौर है। चीनी था आपकी मंटो से मुलाकात या तारुफ जिसको कहिए, उनके काम के हवाले से ही हुआ, वो कैसे हुआ, वो पहला वाक़या क्या था? वो एक दिलचस्प वाक़या है, और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि बाज़ लोग जो इस हॉल में हैं और जो मुझे जानते हैं, मेरी गुफ्तगू सुन के ये कहेंगे कि हम कोई नहीं मिलना चाहते दोबारा। तो हुआ ये, मैं थी 13 साल की, और हमारे घर आया करती थी हमारे ख़ानदान का एक फर्द भी समझिए, ज़हरा निगाह साहिबा। तो मेरी क्लास में एक लड़की थी, मेरी हमजमा। तो शाम को ज़हरा भी जब आई खाने पे, तो मैंने उनसे कहा, ज़हरा भी, हमारी क्लास में एक लड़की है, वो जांघिया नहीं पहनती। अब हम लोग कॉन्वेंट में पढ़ते थे और फ्रॉकें पहनते थे। तो ज़हरा भी ने कहा, इसमें क्या बात है बोला, बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं जिनको जांघिया पहनने से खलिश होती है। और उन्होंने मुझे मोज़ैल की कहानी सुना दी। 13 साल की मैं, हक्का बक्का, मैंने कभी ऐसी कहानी ज़िंदगी में नहीं सुनी थी। जब मेहमान चले गए, सब चले गए, मैंने अम्मा से कहा, मैंने कहा, अम्मा, ज़हरा भी ने मुझे ये कहानी सुनाई थी। तो अम्मा ने कहा, क्यों, तुमने पहले कभी मंटो को नहीं पढ़ा? अम्मा इस पर चुटाई पे काफ़ी पढ़ती थी। मैंने कहा नहीं। तो कहने लगी, मेरे पास नकूश का मंटो का लगता है। अब जब मैं दुकानों में जाती थी, 14, 15, 16, 17, 18 साल की, और मैं मंटो की कहानियाँ तलाश करती थी, तो मुझे कहा जाता था कि हमारे पास नहीं है। और दुकानदार मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखते थे। ये किसकी बच्ची है, कहाँ से आ गई है, लावारिस, मुझे मंटो की किताबें ढूंढ रही है। और पिंडी में मुझे एक दुकान पर मंटो की किताब दूर रखी हुई दिखाई। तो जब मैंने उनसे कहा, साढ़े 3 महीने है। तो इस तरह से मेरा तारुफ हुआ। और फिर 1990 की दहाई, और अब मैं काफ़ी उम्र सीधा हो गई थी, तो मेरी दोस्त आसमा जहांगीर, जो अक्सर मेरे पास आके ठहरती थी लाहौर में, और वो बड़े बड़े डब्बे थे, बड़े बड़े तोहफों के। उस बार वो एक संगीत की किताब लाई,
लाइन, और उन्होंने कहा कि ये किताब जो है ये समीर वाले वो थी आतिशकारी वाली, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अच्छी लगेगी। जब मैंने कहा हो तो मंटो की किताब में छाप रहे हैं ये लोग, तो नियाज साहब का बहुत 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 शुक्रिया। दूसरी चीज़ है कि जब मैंने काम शुरू कर दिया प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे अमीना सैयद बैठे हैं OUP की, तो जिन्हें मैं मुन्नी कहती हूँ, तो कराची में मुन्नी ने मुझे 3 जिल्दें अता की जो उस्मानी साहब ने छापकर एडिशन का। तो ये मेरा तारुफ है, मगर ये ऐसी चीज़ है कि मंटो एक दफ़ा आपके घरों में घुस जाए तो आप इनसे छुटकारा छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। और दूसरी चीज़ ये कि क्यों मंटो आज इतने अहम हैं कि मंटो जो जिस खून खराबे का जिक्र करते हैं, जिस दोगलेपन का जिक्र करते हैं माशरे में, जिस गंदगी का जिक्र करते हैं, वो सब चीज़ें हमारे इर्द गिर्द आज वही फिरका परस्ती वही चीज़ें। तो मंटो हमें गुजर तो गए थे 1955 में, मगर मंटो आज भी हमारे सामने आया है। बिल्कुल। एक और नारा, एक और सलाम जो ज़रूर बनता है हम सबका यहाँ लाहौर में बैठ के, ये किताब मंसूब है जी आसमां जहांगीर के नाम। एंड मंटो होना एक कैफियत है, अगर मंटो होना एक बेबाकी है, एक बहादुरी का मुजाहरा है, then definitely that was also one big hero। आसमां जहांगीर, बहुत सलाम जहाँ भी हैं, खुश रहे, हम हमारी सरपरस्ती करती रहें। कई दफ़ा ये बहस होती है जी कि ज़बान और अदब जो है उसका आपस का ताल्लुक़ क्या है। यहीं हॉल में बैठे हुए कई दफ़ा हम अपनी गुफ्तगू के बहाव में निकल जाते हैं अंग्रेज़ी बोलते बोलते, तो कहीं तोहमत नुमा ये बात सुनने को मिलती है, बात कर रहे थे उर्दू अदब की और अंग्रेज़ी में बोल के यहाँ से निकल गए। कहीं दिल में ये ख्याल आता है कि अदब में जो बात की जा रही है उसकी एक्सेसिबिलिटी, उसकी रसाई उससे कहीं अहम है कि हम सिर्फ एक इजारादारी बना के अदब के ऊपर बैठे रहें। मुझे ऐसा लगता है, मेरी नाक़िस राय के मुताबिक आज एक ऐसी जनरेशन, बल्कि मैं ख्याल 2 जनरेशन एटलीस्ट ऐसी हैं हमारे यहाँ मौजूद जो बहुत कंफ्यूज्ड हैं उस ज़बान के बारे में, जो पूरा एक ज़बान पे अबूर नहीं रखते, अनफॉर्चुनेटली मुझ समेत। सो कहीं बहुत ज़रूरत आपको महसूस होती है कि क्या वो बात सिर्फ ज़बान की महदूद रह जाती, या उसको एक और ज़बान में पेश किया जाए इस नीयत से कि जो मकसद है, जो मैसेज है, वो तो आगे चलना चाहिए, जो कि मुझे लगता है एक बहुत बड़ा ज़िम्मा भी है। सो बहुत सा सलाम, बहुत सा शुक्रिया ये बेड़ा उठाने का कि एक सही मुस्तनद तर्जुमा मंटो का अंग्रेज़ी में किया जाए। एक छोटे से नमूने के तौर पे मैं चाहूँगा एक मुख्तसर सा अफसाना कह लीजिए, कहानी कह लीजिए, जहाँ मंटो साहब ने हमें बहुत से हमारे जिस्म के हिस्सों से, जिस्म के अवामिल से कंफर्टेबल किया कि भाई ये तो है बस, मतलब इसके बारे में इजी हो जाए। तो उसी कड़ी में अफसाने का उन्वान है मूत्री, और शाहिद साहब से गुजारिश करूँगा वो उसका उर्दू वाला वर्जन पढ़ें, एंड नसरीन रहमान से गुजारिश करूँगा जो उन्होंने उसको अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया है। यकीनन आपको मूत्री में जाने का इत्तेफाक हर इंसान को होता है, लेकिन देयर आर मूत्रीज एंड मूत्रीज। हमारे यहाँ भी आर्ट्स काउंसिल में या दूसरे हॉल्स में ज़रा मुख्तलिफ किस्म की होती है, मगर ये ज़रा थोड़ी सी सियासी मूत्री है। ये 1945 में लिखा था जब ये बहुत गर्म था, जो पार्टीशन का हंगामा। तो ये मैं आपके सामने पेश करता हूँ। कांग्रेस हाउस और जिना हॉल से थोड़े ही फासले पर एक पेशाब गाह है जिसे बम्बई में मूत्री कहते हैं। आसपास के महलों की सारी गलाजत और ताफुन भरी कोठरी के बाहर ढेरियों की सूरत में पड़ी रहती है। इस कदर बदबू होती है कि आदमियों को नाक पर रुमाल रखकर बाजार से गुजरना पड़ता है। इस मूत्री में एक दफ़ा उसे मजबूरन जाना पड़ा।
पेशाब करने के लिए नाक पर रुमाल रखकर सांस बंद करके वो बदबूओं के इस मस्कन में दाखिल हुआ। फर्श पर गलाजत बुलबुले बनकर फट रही थी। दीवारों पर आज़ाए तनासुल की मुहीब तस्वीरें बनी थी। सामने कोयले के साथ किसी ने ये लफ्ज़ लिखे हुए थे, मुसलमानों की बहन का पाकिस्तान मारा। इन अल्फाज ने बदबू की शिद्दत और भी ज़्यादा कर दी। वो जल्दी जल्दी बाहर निकल आया। जिना हॉल और कांग्रेस हाउस दोनों पर गवर्नमेंट का कब्जा है, लेकिन थोड़े ही फासले पर जो मूत्री है वो उसी तरह आज़ाद है अपनी गलाजतें और अफूदतें फैलाने के लिए। आसपास के महलों का कूड़ा करकट अब कुछ ज़्यादा ही ढेरियों की सूरत में बाहर पड़ा दिखाई देता है। एक बार फिर उसे मजबूरन उस मूत्री में जाना पड़ा, जाहिर है कि पेशाब करने के लिए। नाक पर रुमाल रखकर सांस बंद करके वो बदबूओं के इस घर में दाखिल हुआ। फर्श पर पतले पाखाने की पपड़ियाँ जम रही थी। दीवारों पर इंसान की औलाद पैदा करने वाले अज़ा की तादाद में इजाफा हो गया था। मुसलमानों की बहन का पाकिस्तान मारा के नीचे किसी ने मोटी पेंसिल से ये घिनौने अल्फाज तहरीर किए हुए थे, हिंदुओं की माँ का अखंड हिंदुस्तान मारा। इस तहरीर ने मूत्री की बदबू में एक तेजाबी कैफियत पैदा कर दी। वो जल्दी जल्दी बाहर निकल आया। महात्मा गांधी की गैर मशरूत रिहाई हुई। जिना को पाकिस्तान में शिकस्त हुई। जिना हॉल और कांग्रेस हाउस दोनों को शिकस्त हुई, ना रिहाई। उन पर गवर्नमेंट का और उसके थोड़े ही फासले पर जो मूत्री है उस पर बदबू का कब्जा जारी रहा। आसपास के महलों का कूड़ा करकट अब एक ढेर की सूरत में बाहर पड़ा रहता है। तीसरी बार उसे फिर मूत्री में जाना पड़ा, पेशाब करने के लिए नहीं। नाक पर रुमाल रखकर सांस बंद करके वो गलाजतों की इस कोठरी में दाखिल हुआ। फर्श पर कीड़े चल रहे थे। दीवारों पर इंसान के शर्मनाक हिस्सों की नक्काशी करने के लिए अब कोई जगह बाकी नहीं रही थी। मुसलमानों की बहन का पाकिस्तान मारा और हिंदुओं की माँ का अखंड हिंदुस्तान मारा के अल्फाज मध्यम पड़ गए थे, मगर उनके नीचे सफ़ेद चौक से लिखे हुए ये अल्फाज उभर रहे थे, दोनों की माँ का हिंदुस्तान मारा। इन अल्फाज ने एक लहजे के लिए मूत्री की बदबू गायब कर दी। वो जब आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकला तो उसे यूं लगा जैसे बदबुओं के इस घर में एक बेनाम सी महक आई थी, सिर्फ एक लहजे के लिए। It's basically 1.5 pages. So I will read it in English. And I have to say that this was one of the most difficult stories that I translated in this compendium. क्योंकि मैं बहुत से ये लफ्ज़ जो थे, हालांकि मैंने कहानियों तो मंटो की 1000 दफ़ा पढ़ी हुई थी, मगर मैं अपने लबों पे ये लफ्ज़ नहीं ला सकती थी। और जब तक आप आवाज़ अपने अंदर ना बसा लें, आप उसका तर्जुमा नहीं कर सकते। तो मैंने किया। Not far from Congress House and Jinnah Hall, there is a urinal, generally referred to as a mootree in Bombay. All the filth of the local neighborhood piles up outside this foul-smelling little shed. The stench is so overpowering that those forced to walk past it must cover their noses with their handkerchiefs. One day, he had no option but to use the urinal. He held his breath, covered his nose with a handkerchief, and entered the fetid hellhole to urinate. He found its floor smeared with rank feces and the walls covered
with sexually explicit graffiti. In front of him, somebody had written, "Screw the Pakistan of the Sisters of Muslimans." These words intensified the putrid stench, and he rushed out. The government has control over all the activities in Jinnah Hall and Congress House, but the urinal around the corner is free to spew its filth. And mounds of garbage from the local neighborhood grow higher by the day. One day, yet again, he had to use the urinal. He covered his nose with his hanky, held his breath, and entered the hellhole. Streaks of running feces had dried on the floor, emissions of semen had multiplied on the walls. Below, "Screw the Pakistan of the Sisters of Muslimans," somebody had inscribed these vile words: "Screw the Akhand Hindustan of the mothers of Hindus." These inscriptions added a noxious heat to the stench of the urinal, and he rushed out. Mahatma Gandhi had been released unconditionally, Jinnah lost in Punjab, and Jinnah Hall and Congress remained under the government control. Around the corner, the urinal remained under the sway of that fetid stench as the mounds of rubbish from the local neighborhoods rose higher. He had to visit the urinal yet again for the third time. This time, it was not to urinate. He covered his nose, held his breath, and entered the house of filth. Revolting creatures swarmed around the floor. Images of shameful parts of the human anatomy covered the walls, leaving no room for graffiti. The words, "Screw the Pakistan of the Sisters of Muslimans," and "Screw the Akhand Hindustan of the mothers of Hindus," had faded. Below, someone had written in white chalk, "Screw the Hindustan of the mothers of both." For a moment, these words blocked out the stench of the urinal. As he walked out of the foul-smelling house of filth, he thought he caught a whiff of an unnamed perfume. Thank you, Shahid Sahab. Thank you, Nasreen. Undoubtedly, मंटो साहब ने ना सिर्फ बहुत कुछ अहम लिखा, लेकिन एक ऐसी तादाद में भी लिखा जिसकी मिसाल दुनिया के अदब में आपको बहुत कम मिलती है। चाहे वो उनका अंदाज़े बयां हो, चाहे वो डिफरेंट तरह की जॉनरास और फॉर्मेट्स के अंदर लिखना हो, लेकिन शॉर्ट स्टोरी के मेरे लिए बैनुल अक़वामी अदब के 2-3 बेताज बादशाहों में से एक मंटो हैं। मंटो साहब की एक अजीम कहानी, वन ऑफ हिज मोस्ट आइकॉनिक वर्क्स, हतक। लफ्ज़ हतक मेरा ख्याल है हम ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसी कैफियत से गुजरते हैं जब हमें लगता है कि हमारी हतक हुई है, और वो हतक क्या होती है। नसीर रहमान ने ट्रांसलेट किया है हतक को एज ह्यूमिलिएशन। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट नसीर रहमान से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उसका बिल्ड करें, और मैं और समिया फिर कुछ एक्सर्प्ट्स आपके सामने उसमें से पढ़ेंगे। हतक जो कहानी है वो सौगंधी के बारे में है। सौगंधी जो है उनको आप एक दाश्ता कह सकते हैं, आप उनको एक तवाइफ कह सकते हैं, आप उनको रंडी भी कह सकते हैं, आप उनको प्रॉस्टिट्यूट भी कह सकते हैं, मगर मेरे ख्याल में सौगंधी एक अजीम इंसान है। तो सौगंधी जो है वक्त की सताई भी हैं, और कभी कभी वो अपने आईने में देखती हैं, वो आईने से मुखातिब भी होती हैं। वो कहती हैं कि ज़माने ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और सौगंधी में ये भी एक चीज़ है कि वो मोहब्बत और इश्क की तलाश में हैं, और वो ये चाहती हैं कि जो भी उनके पास आए उनसे मोहब्बत कर लें। तो एक उनको टकराते हैं जो गाहक बन के उनके पास आते हैं, माधव। और माधव जो हैं वो सौगंधी को बहुत सब्ज़ बाग दिखाते हैं, वादे करते हैं, और सौगंधी से पैसे उड़ा के ले जाते हैं।
उनको ठेंगा देते हैं और उनके पैसे उड़ा के ले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में मैंने सौगंधी के बारे में काफ़ी कुछ कह दिया है, और उनके जो दलाल हैं हफिज इज़राम लाल, जो आके उनको वक्त पे वक्त उठा के ले जाते हैं, रात को जगा के ले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में आपकी रीडिंग जो है वो वहाँ से है। हम दरमियान में से उसमें से एक इक़्तिबास पढ़ रहे हैं। सौगंधी को रामलाल दलाल ले जाते हैं और एक ग्राहक गाड़ी में आके रुकता है और वो उनको देख के कह के चला जाता है। What was the meaning of the ringing in her ears? Saugandhi had an irrepressible desire to wave her legs, her hands and her arms. Where was that car? Where was the Seth? So, meant he did not like me? A profanity erupted in her stomach, but stopped as it reached the tip of her tongue. She did not understand at whom or at what to direct her anger. With these unsettling thoughts, Saugandhi climbed up to her kholi on the second floor, and taking the key out of her choli, she tried to unlock the door. But it was unlocked. Saugandhi pushed the door, which squeaked as it yawned open. Saugandhi walked in, and Madhav's laugh appeared beneath his moustache. He shut the door and turned to Saugandhi. Finally, you took my advice and went downstairs. A morning walk is good for your health. If you do this every day, all your weariness will disappear, as will the pain in your back that you complain of every other day. Did you go to Victoria Garden? No? Saugandhi gave no response, and Madhav did not express the need for one. When Madhav said something, it was not because he wanted to have a conversation with Saugandhi. He talked simply for the sake of talking. Madhav sat down on the wicker chair, the back of which had a fresh, large, nasty stain left by his greasy head. He crossed his legs and began to twirl his mustache. Saugandhi sat on her bed and said, "Actually, I was waiting for you today." Taken aback, Madhav asked, "Waiting? How did you know I was coming today?" Saugandhi's pursed lips turned into a saccharine smile. "I saw you in my dream last night, but when I woke up, there was no one around. I just felt like going out for a stroll and..." A happy Madhav chirped, "And I arrived. I tell you, great people do great things." Someone was right when he said, "Heart speak to heart." When did you have this dream? "About 4 o'clock, responded Saugandhi. Madhav got up from the chair and slunk close to Saugandhi. "And I saw you in a dream exactly at 4 o'clock. You were wearing a floral sari. Wearing exactly this sari, you were standing next to me. What were you holding in your hands?" "Yes, you were holding a bag full of money. And you put the bag on my lap and said, 'Madhav, don't worry. Here, take this bag. Isn't my money your money?' Saugandhi, I swear upon your life, I woke up immediately, bought a ticket, and headed here. I'm so worried. A case came up out of the blue. Now, if I had 20 rupees, I'd grease the inspector's palm and sort it out." "You aren't tired, are you? Why don't you lie down? Should I massage your feet? You're not used to walking. You must be worn out. Here, turn your feet towards me and lie down." Saugandhi lay down on her side. She formed a pillow with both her arms and rested her head on her hands, and looked at Madhav. She asked him in an atypical tone, "Madhav, who is this character who has filed a case against you? If there's a danger of jail, shame, tell me. Forget 20-30. At such times, even if you hand the police 50 to 100, the gain is yours. You know the saying, save your life and gain 100 million. You can stop now, I'm not so tired. Forget the massage and tell me all. My heart's racing at the thought of the case. When are you heading back?" Madhav could smell the alcohol on Saugandhi's breath.
and thought this an excellent opportunity to try his luck. I have to go back by the afternoon train. I must give between 50 to 100 to the sub-inspector by the evening. There's no need to give me too much. I think 50 will do. 50. Saugandhi remained calm. She stood up and proceeded slowly towards the 4 photographs hanging on the wall. The third from the left was Madhav's. He looked uncomfortably at the camera with his eyes wide open. Saugandhi burst into a ripple of laughter so sharp that Madhav felt needles had pierced his body. He walked up to Saugandhi and asked, "Whose photograph made you laugh so much?" With one hand, Saugandhi pulled off the image of the turbaned man, and with the other, she removed the frame that held Madhav's photo. Madhav shrank into himself as though he feared her hand was heading for him. Saugandhi laughed out loud, and in a split second, the frame was in her hand along with the name. She said, as she flung both photographs out of the window. As the frames fell to the ground, the sound of shattering glass reached their ears. Madhav felt something inside him had cracked. He struggled to speak but managed to say, "Well done, I didn't like this photo either." Saugandhi walked up to Madhav purposefully. "You didn't like this photo? I ask you, is there anything in you for somebody to like? Your pakora-like nose, your hairy forehead, your swollen nostrils, your twisted ears, the stench of your mouth, the grime on your body, and you did not like your photo? Why would you like it? It hides your defects." Madhav tried to move away from her and finally, with his back to the wall, he found enough strength to say, "Look, Saugandhi, I think you've started your business again. Now I'm telling you for the last time." Saugandhi mimicked Madhav. "If you start your business again, things will end between us. If you keep somebody at your place again, I will drag you by your hair and throw you out." "Yes, what is the rent for this kholi?" Madhav felt his head go into a spin. Saugandhi continued, "Well, let me tell you, the rent for this kholi is 15 rupees, and my rent is 10 rupees. And as you know, the pimp takes 2.5 rupees, and that leaves 7.5 rupees. Doesn't that leave 7.5 rupees? And for 7.5 rupees, I promised to give you something I did not have to give. And you came to take something you could not take. What bond do you and I have? None. It was just the 10 rupees that connected the two of us. You needed me and I needed you. First, it was just 10 rupees that connected us. Today it is 50. You know it, and so do I. What's this mess you've made of your hair?" Saugandhi flicked aside Madhav's cap. Madhav found this intolerable and shouted angrily, "Saugandhi!" Saugandhi pulled the handkerchief out from Madhav's breast pocket and threw it on the floor. "This rag? Oof, what an awful stench! Pick it up and throw it out." Madhav shouted, "Saugandhi!" Saugandhi responded in a biting tone. "Saugandhi's ass! Why have you come here? Does your mother live here that she will give you 50 rupees? Or are you some great handsome stud with whom I have fallen in love? You vile dog! You try to boss me around. Am I your mistress? You beggar, who the hell do you think you are? Who are you? A thief or a robber? Why have you come to my house at this hour? Should I call the police? I don't know if there's a case in Pune or not, but I'll file a case against you here." Madhav shriveled up. All he could bring himself to say in a very subdued tone was, "Saugandhi, what's happened to you?" "Your mother's head. Who are you to ask me such questions? Get lost or else." Saugandhi's itchy, scratchy, mangy dog woke up, agitated, looked at Madhav and began to bark. Madhav was terrified. And as he leaned forward to pick up his cap, Saugandhi roared. "Don't you dare! Leave it there and just get lost. I'll send it to you by money order." She began to laugh and sank into the wicker chair. Her itchy, scratchy, mangy dog continued to bark and barked Madhav out of the room. After seeing Madhav off down the stairs, the dog returned, shook its mangy tail, sat down at Saugandhi's feet, and fluttered
its ears. Saugandhi sat on the wicker chair for what seemed like an age. She racked her brain but could not come up with a remedy to console her aching heart. She lifted her mangy dog in her arms and lay down on her teak bed and fell asleep with it by her side. I think we are running short of time somehow. I miscalculated. How about, with your permission, I open the house now for questions? It's only 13 minutes. Shall I? If we read, another reading or questions? Sure? Okay. Just a little forward, Shahid Saab, I'll request you. The story is, again, I think I think it's very easy that when you don't want to deal with something or when you don't want to understand something, you deem it controversial. And that has happened to Manto Saab a lot, and to some of us too. Moselle, Shahid Saab, what is Moselle? Moselle is a remarkable story and translated very well by Nasreen. Imagine it's Bombay and Sikh characters and Muslim characters and Jews among them. And this character, Moselle, is transcending all the boundaries, moral, political, religious. And she is a free spirit and just defying all the small barricades created by different communities. And she shines out of that. And she doesn't wear underwear, as Nasreen said. And she doesn't even believe in wearing anything when it comes to saving a life. So she saves the life of Kirpal Kaur, a Sikh girl, and just there is no time, so she takes off her Jewish clothes and put on her so that she looks like a Jew and is allowed to go out. And she is left without any clothes on her, but she is satisfied and she is not nude at all. She has exposed the nakedness of the society and the religious boundaries. So it's a very powerful story, and I look forward to hearing the extract. An excerpt from Moselle. It was the first time in 4 years that Trilochan was experiencing what it was like to stand under a cloudless Bombay sky, feeling the sea breeze in the darkness of the night with the shimmering city lights. As he thought of Kirpal Kaur, his mind drifted to Moselle, the Jewish girl who lived in Advani chambers. There was a time when Trilochan was stuck knee-deep in love with her. In the 35 years of his life, he had never experienced such love. He had quite literally bumped into Moselle the day he moved into a flat on the second floor of Advani chambers, courtesy a Christian friend. Moselle's flat was opposite Trilochan's with a very narrow corridor in between. One day he was entering his flat when she stepped out of hers, and he stopped at the sound of her wooden clogs. Moselle gazed at an astonished Trilochan through a veil of her unruly hair and laughed. She looked terrifyingly loopy. Her cropped brown hair was disheveled, very disheveled. Although her lips were not so thick, her dark, dried burgundy lipstick looked as though congealed blood had cracked in several places. She was wearing a long baggy kaftan, and through its open collar, Trilochan could see almost 3/4 of her large breasts. Moselle's arms looked as though tiny clippings of hair had fallen on them during a trim at the hairdresser's. Hurriedly, Trilochan fished his keys out of his pocket and was unlocking his door when one of Moselle's clogs slipped on the greasy cement floor, and she fell on him. A long kaftan climbed up, and Trilochan found himself caught between her two rather strong, bare legs. He tried to stand up, but to his bewilderment, Trilochan found himself trapped by Moselle in her entirety. He felt a bit like soap spread across her entire body.
A breathless Tirlochan apologized using the most appropriate words he could find. Moselle adjusted her kaftan and smiled. These clogs are condom. She tucked her big and adjoining toes into the errant clog and stepped out of the corridor. Tirlochan thought it would be a challenge to befriend her, but in next to no time Moselle became quite unrestrained in his company. Still, if he tried to proceed further than her arms and lips, she ticked him off in a manner that made his passion retreat into his beard and mustache. Tirlochan continued to suffer for 2 years, but he remained steadfast. Tirlochan was gorgeous. Before he sprouted a beard and mustache and roamed around his village with his long hair hanging loose, people frequently mistook him for a beautiful adolescent girl. He knew better than most that the bushy mass of his beard concealed his perfect features, but he was a sensitive and dutiful son with profound respect for his religion. Besides, he did not wish to disassociate himself from the practices that were outward symbols and professions of his faith. He asked Moselle, "What are you doing?" She answered with the pins clenched between her teeth, "Your hair is very soft. I was wrong to think it would clean my navy blue skirt. Triloch, give it to me. I'll have it plaited and made into a first-class handbag for myself." Tirlochan turned towards Moselle and said in a very grave tone, "To this day, I have never poked one at your religion. Why do you do this? It's not good to play with someone's religious feelings. I would never put up with this, but I do, because I love you immediately. Don't you know this?" Moselle began to play with Trilochan's beard. "I know." Then, Tirlochan folded his beard deftly and removed the pins from Moselle's teeth. "You know my love is not some nonsensical fancy. I want to marry you." "I know." Moselle tossed her hair ever so slightly and stood up. She began to study the paintings hanging on the wall and said, "I've almost decided to marry you." Tirlochan jumped up. "Truly?" Moselle's thick burgundy lips parted in a wide smile, revealing her perfect white teeth. "Yes." With his beard half wound up, Tirlochan squeezed Moselle to his chest. "When? When?" Moselle moved away. "When you have your hair chopped off." Tirlochan was in a give-it-all one's got mood, and without thinking he said, "I'll have it chopped off tomorrow." Moselle broke into a tap dance number. "You're talking nonsense, Triloch. You don't have the guts." Moselle's words wiped off any lingering thoughts about religion from Tirlochan's heart and mind, and he said, "You wait and see." "I shall," said Moselle. She stepped forward hurriedly, kissed Trilochan's moustache, and walked off, muttering, "Phew, phew." So they say कि time थोड़ा कम है, so maybe we should make it a little. So we will just go to questions के लिए time कर लें. So shall we go to page 11? Yeah. Okay. Something happens. For that you will have to go back and read the story. So we'll take it. Moselle continue. Moselle continued, "Why has this girl advised you to grow your hair?" No. Tirlochan responded in a sharp tone. He felt the same discomfort he felt when disentangling the hair of his beard with a comb. Moselle smiled, and her lips, with the dried burgundy lipstick, reminded Tirlochan of pieces of stale buffalo meat, chopped from a chunk with a thick vein, like the ones he had seen hanging in the Chadka butcher's shop in his village. She laughed. "Shave off this beard and make me swear on anyone. I'll marry you today." Tirlochan wanted to tell her that he was in love with a decent and chaste girl who was a virgin, and he was going to marry her. He wanted to add that in complete contrast, Moselle was obscene, ugly, unfaithful, and uncaring. But he was not an unkind man, and he said, "Moselle, I have decided to marry a simple girl from my village. She is religious, and that is why I have decided to grow my hair." Not given to reflection, Moselle thought for a while as she swung one of her clogs in a semicircular motion around the index finger of her right hand and asked Trilochan, "If she is religious, why would she accept you? Doesn't she know that once you had your hair chopped off?" "She doesn't know. I started growing my beard after you left for Deolali, merely as revenge, and I met Kripal Kaur much later. The way I tie my turban, perhaps one person in 100 can figure out that I cut my hair, and this too I shall rectify soon."
Tilochan began to comb his soft long hair with his fingers. Moselle lifted her long kaftan and began to scratch her hefty white thighs. That's very good, but wretched mosquitoes are here as well. Look how badly they've bitten me. Tilochan turned to look in the opposite direction. Moselle licked her finger and applied saliva to the spot where a mosquito had bitten her. She let down her kaftan and stood up straight. When are you getting married? I don't know, said Tilochan, looking very anxious. Moselle remained silent for a few moments, but she sensed his anxiety and asked in a serious tone, Tiloch, what are you thinking? Tilochan felt he needed sympathy, and even though it was Moselle, he recounted his entire dilemma. Moselle laughed. You are an idiot of the first order. Go and bring her. What's the difficulty? Difficulty? Moselle, you can't appreciate the delicacy of this situation, or any situation. You are a hot-headed girl, and this is the reason our relationship won't last. It is something I will regret all my life. Moselle banged her clock on the water pipe. Regret be damned. Silly idiot. Just think. You must rescue what's her name from that neighborhood, and here you are weeping over our relationship. Our relationship could never have lasted. You're a silly man and a coward. I want a fearless man. But forget these matters. Come, let's get your cord. And she grabbed Trilochan's arm. You have to read the story to understand what it is about. Question. Do we have 5 minutes or are we wrapping up? Okay, 5 minutes, Ji, please. Any questions? Nobody has a question. Over there, do you have a microphone or can you just... Jia. وہ بول رہے ہیں کہ اردو میں ہم کیوں زیادہ شرم یا آر محسوس ہوتی ہے وہ الفاظ بولتے ہوئے، جبکہ انگریزی میں ہم وہ الفاظ اپنی روزمرہ میں بول کے ایزیلی بول جاتے ہیں. ہر زبان جو ہے اس کا رشتہ معاشرے سے ہوتا ہے، سماج سے ہوتا ہے. تو اردو میں یہ لفظ ہم لوگ نہیں استعمال کرتے ہیں عام بول چال میں، اور انگریزی جیسے بڑھی ہے جدید زمانے میں، انگریزی میں یہ جو موضوع تھے ان کی ہم بات چیت کر سکتے تھے اور کرتے تھے. یہاں بھی بچے جو ہیں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو انگریزی کے استعمال کرتے ہیں جب خاص طور پہ جنسی معاملات پہ بات ہوتی ہے. تو یہ ایک کلچر، ثقافت، تہذیب کی بات ہے. اور مجھے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ 13 سال کی عمر سے جب میں پڑھ رہی تھی منٹو، تو پڑھ تو میں رہی تھی اور اردو میں ہی پڑھ رہی تھی، مگر میں وہ لفظ پڑھتی تھی اور ظاہر ہے اپنے تحت الشعور سے بھی میں ان کو خارج کر دیتی تھی کہ جب میں بیٹھی ترجمہ کرنے میں نے کہا ہاں یہ کیا ہے بھائی، اس کا میں کس طرح ترجمہ کروں گی، اس کو میں کیسے لکھوں گی، اس کو میں کیسے ڈالوں گی اپنے کمپیوٹر میں. یہ تو میرے ساتھ ہوا. اور پھر میں نے کہا بھائی منٹو ہے، اب منٹو کو میں سینیٹائز تو نہیں کر سکتی، اب میں اس کو سینیٹائز کا لفظ استعمال کروں، اس کو میں پاک اور صاف کس طرح کروں گی. بھائی منٹو ہیں. اس کا ایک چھوٹا سا جواب میں یہ دے سکتا ہوں کہ منٹو پہ جب کیس چلا تھا ٹھنڈا گوشت کے سلسلے میں، تو انہوں نے کہا کہ اس کا جو کیریکٹر ہے وہ بہت گالیاں دی ہوئی ہیں اس نے، حالانکہ منٹو نے گالیوں کو ذرا تھوڑا سا سافٹ کر کے پیش کیا تھا. تو منٹو تو یہ فحاشی ہے. منٹو نے کہا کہ یہ جس طرح کا انپوچھ کیریکٹر ہے، جس طرح کا وحشی کیریکٹر ہے، اس کے منہ سے میں گنگا جمنا دلی زبان تو نہیں ڈالوں گا. اگر میں یہ گنگا جمنا دلی زبان یوز کرے تو وہ فحاشی ہوگی. تو اس لحاظ سے منٹو کے کیریکٹر جو ہیں اس کے حساب سے وہ بات کرتے ہیں.
اور جہاں تک گالیوں کی ٹرانسلیشن کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ انگریز ابھی ہم سے بہت پیچھے ہیں. انہوں نے ایف ورڈ آج سیکھا ہے، ہم صدیوں سے استعمال کر رہے ہیں. ایک سوال یہاں ہے جی. سوال جی ایک چیز نسرین سر کہہ لیں. کہ میرا آن ہے، ہاں میرا آن تھا کہ دیکھیے میں زمانے کی عکاسی کرتا ہوں، میں زمانے کو چولی نہیں پہنا سکتا، وہ تو ایک درزی کا کام ہے اور میں درزی نہیں ہوں. جی سر غالباً یہ آخری سوال ہی ہوگا. جی السلام علیکم، میرا نام خورم ہے اور میں تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فار یور. میرا سوال کرنا تھا آپ سے، میری خوش قسمتی ہے کہ آپ کا منٹو فلم میں نے دیکھی ہوئی ہے. جس طرح منٹو اپنے ٹائم میں اپنے فن کو ڈیمونسٹریٹ کرنے میں ان کو چیلنج ہوتا تھا، اسی طرح آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے. منٹو تو ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، آپ اس کیفیت کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ آپ ایک فن کلا پیش کرتے ہیں اور اس میں آپ کو ریزسٹنس آتی ہے اس کو ڈیمونسٹریٹ کرنے میں، تو ان چیلنجز کے بارے میں جو ایک اداکار کو ایک فنکار کو محسوس ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟ شکریہ. سب سے پہلے تو جی یہ صرف میرے ساتھ نہیں، شاہد صاحب یہاں بیٹھے ہیں، شاہد صاحب نے اس زمانے میں ریزسٹ کیا ہوا ہے جس زمانے میں بہت سی زبان بندی تھی، بہت سی چیزوں پہ بہت سے پہرے تھے. میں بالکل خود کو اس وہم میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا کہ میں کہیں سے بھی منٹو صاحب کے ساتھ کوئی کمپیریزن بنے، مگر میں اس کے جواز میں یہی کہتا ہوں کہ جب آپ کو کسی سے بہت عشق ہوتا ہے تو ان جیسے گن آپ میں نہیں آتے، کبھی ان جیسی قسمت آپ کی ہو جاتی ہے. تو منٹو صاحب جیسے گن تو نہیں آئے، لیکن جی مجھے لگتا ہے کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا جب اس کے ساتھ کچھ انفیئر ہوتا ہے. یہ ایک انسانی انسٹنکٹ ہے، یہ ایک انسانی ریفلیکس ہے، اور ناجائز چیز کو ناجائز سمجھنا میرا خیال ہے ایک بنیادی تقاضا ہے معاشرت کا، صرف شور و غوغے کے لیے نہیں. It didn't feel good to be honest. It doesn't feel like that آپ کے منہ پہ کوئی ہاتھ رکھ کے آپ کا سانس لینا بند کرے تو برا لگتا ہے. لیکن ایک ایسے معاشرے میں جہاں ہم عام طور پہ سوال اٹھاتے ہیں اس بات پہ کہ کیا جہاں بنیادی زندگی کی ضروریات اور سہولیات نہیں ہیں وہاں آرٹ کی کیا گنجائش ہے، وہاں آرٹ کی کیا اہمیت ہے، تو پھر دل میں کہیں یہ یقین بھی پختہ ہو جاتا ہے کہ اگر آرٹ کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر آرٹ سے لوگ اتنا ڈرتے نہیں. وہ جتنا ڈرتے ہیں مجھے لگتا ہے آرٹ کی بہت گنجائش ہے. And I also want to thank Luchi Manto and Lizzie Manto. They're right there. Manto Saab's daughters are right here, ji. Thank you very much for just gracing this. Thank you so much, Nusrat Manto and Nusrat Manto. That thank you was from me. میری پیاری بہنیں لچی اور نسرین جنہوں نے اس کام میں میرا اتنا ساتھ کیا، اور لچی جس کو میں نے پاگل کر دیا سوال پوچھ کے، اور یہ بچیاں میری سہیلیاں، میری دوستیں، میری بہنیں، جو نزی تو میرے ساتھ کنیڈ میں بھی تھی اور کیا یہ گاتی تھی، اور انہوں نے اپنے ابا کی جو زندگی کی جو کا المیہ جو تھا، جو ان کے سامنے یہ کہانیوں میں اور اس کے بعد میں جو زیادتی زمانے نے اور پاکستان نے ان کے ساتھ کی، وہ سب کے بہت ہی محبت، بے حد محبت، اور تہ دل سے تم دونوں کا بہت 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 شکریہ کہ اس سفر میں تم دونوں میرے ساتھ. وقت کم ہے جی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. 3 2 1 مل کے نعرہ لگائیں گے، منٹو زندہ باد. Say it. 3 2 1. Manto zindabad. Thank you.